Hi guys, welcome to another set in this LRDI practice series. So today we have this DI set. First pause this video, try the set yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now this says the following table shows the number of students opting for different streams in a B school, right? So we have these different streams. Also the table shows the percentage of students from engineering background in each stream as compared to the total number of students from the engineering background in the B school. All other students are from commerce background. Some students from commerce background stay in hostel while the remaining commute every day. These students are called day scholars. Now, on the basis of this, we have the following four problems. So, let's understand what is actually mentioned in this particular table and then go to the problems and then solve them one by one. Now, this data is actually giving us the number of students in each of these departments: marketing, finance, operations, IT and HR. 300, 200, 450, 500 and 350. This percentage, now we'll have to be very careful in this particular column. This 25 percentage is not to be calculated on this 300, because it is not said that the percentage of the number of students in marketing is actually given. No, this percentage is the percentage, this is the percentage of students from engineering background in each stream as compared to the total number of students from the engineering background in the B school. So for example, if there are, let's say, X engineering students in total, out of that X, 25% are in the marketing department, 20% are in the finance department, 15% are in ops, 25% are in IT, and finally 15% are in HR. So if your engineering total is, let's say, X, the X has to be divided according to these percentage, and those numbers are the number of engineering students in these particular departments, right? This is the first part, and the next part is fairly simple. The students which are not from engineering background, it is said they are from the commerce background. So suppose if I say this is X, so this is going to be 0.25x. Now 300 minus 0.25x would give me the total number of commerce students in each particular branch, right? And this particular columns actually bifurcates them on the basis of whether they are hostelers or they are day scholars. So that number 300 minus 2.5x can be divided in the ratio 2:3, and this can be done for each of these departments. That is what is specifically mentioned in this particular table, right? So I hope you have comprehended this well. Now let's proceed on to question by question. First, let's simply write this again. So if this was, let's say, x, so this is going to be, let's say, 0.25x. This is 0.2x. You can also take this as 100x maybe. So you could directly write that as 25x, 20x, 15x and so on. Doesn't make a difference. So this is 0.15x. Then this is 0.25x. Then this is 0.15x. Right? And we can also subtract each of the. Let's first read the problems and see whether that is actually required or not. So the first question: if the number of students from commerce background who have opted for marketing, so commerce for marketing, commerce background who have opted for marketing, so that number would be 300 minus 0.25x. So that is 300 minus 0.25x. This number is 1/6. This number is 1/6 of what? 1/6 of the number of students of commerce background who have opted for operations. So we'll do the similar thing for operations as well. So operations commerce students will be 450 minus 0.15x. So 450 minus 0.15x. So this equation is given. Find the ratio of the total number of students from engineering background to the total number of students from commerce background in the B school. So we'll have to figure out the total number of engineering students, because the total number of students is already given. We can just add these and subtract the total number of engineering to figure out the total number of commerce student, right? So first let's solve this particular equation. So this is 300 minus 2.5x. The 6 will get multiplied to this, so this is 1800 minus 6 into 0.25x is 1.5x is equal to 450 minus 0.15x. So 450 gets subtracted, so this is 1350
equals 1.5 minus 0.15x. So this is 1.35x. So this simply means x is equal to 1350 divided by 1.35. That would simply give me 1 followed by 3 zeros, that is 1000. So x value is 1000 for the first problem, right? So you cannot actually say this for the remaining problem. So just take it for this particular problem. So x is 1000. So that means the total number of engineering students we have got is 1000. And we have to calculate the total number of students now. So 300, 200, 500, 500 and 500 is 1000, 1000 and 450, 350 gives us 800. So 1800 total number of students are there. So out of 1800, 1000 are engineering. That means the remaining 800 would be commerce students. That means the required ratio is 1000 is to 8, 10 is to 8, 1000 is to 800, or 10 is to 8, or maybe 5 is to 4 also. So we can simplify the ratio, right? So this question is not so difficult. Now the next problem. If there are 600 students from engineering background in the B school, now this gives us the total number of engineering students in the B school, and find the number of commerce students staying in hostel. So this is a bit calculative. We'll have to calculate the total number of commerce students for each of these departments, and then we'll have to break that down in this particular ratio. So this could be done, but this is a little lengthy. So let's start doing this. So this number changes to 600, right? So this is 600. Now out of 600, this is 0.25x, so this is 1/4, that's 1/4, this is 150. This is 20% of 600, that is 120. This is 15% of 600, this is 90. This is 25%, again 1/4, that is 150. This is 15%, that is again 90. So these are the respective engineering students in these departments. Let's subtract them from the total to get the commerce student. So commerce student would be 300 minus 150, that is 150. 200 minus 120, this gives us 80. 450 minus 90, this gives us 360. 500 minus 150, this is 350. Then 350 minus 90, this would give me 260. Right, now let's break these down in this particular ratio. So suppose had it been 2 and 3 students, so the total would have been 5. Now instead of 5 we have 150, so 30 times, so 30 into 2, 30 into 3. So let's just figure out the first number. So 30 into 2 would be 60 students in this case, right? Is simply dividing this in the ratio. 1/4 would be 5, 5 की जगह पे 80, that is 16 times. So 16 into 1 would be 16. Next number 3 is to 2, so 5 की जगह 360, so 72 times. So 72 into 3, 72 into 3 is 216. So this is 216. Next number 3 is to 7 is 10. 10 की जगह 350, that is 35 times. 35 into 3, 35 into 3 is 115. Not 3, 35 into 3 is 105, sorry, 105. Then 4 is to 1, that is 5. 5 की जगह 260, 5 की जगह 260. That means this is 52 times. So 52 into 4 we need. So 52 into 4 is 208. So this is actually the total number of hostelers which are actually commerce students. So let's just check the unit digit also, because this is fairly easy. All the three numbers are ending in a 0. This one number is ending in a 5. Maybe this helps. So if we add all these, so we'll end up with a 6 plus 6, 2. 2 plus 8 will give us a 0, and we have a 5. So that means our answer should end up with a 5. So we can simply take 605. Now let's move on to the next problem. Again, remember, this data was only for this particular problem. We cannot take it any further. How many of the values given below can be the possible fractions of students from engineering background to the total number of students from the college? Now,
How do we go about this particular problem? So let's just erase a bit. Now, the point is, there is no fixed answer to this particular problem, right? Only then this word is mentioned, can be the possible fractions of student. So we'll have to figure out what can be the condition on the basis of which we can simply say what can be the possible fraction. So let's go back to our basics again. The number of commerce student, number of commerce student here would could be 300 minus 0.25x, right? The commerce student in finance would be 200 minus 0.2x. In operations, it would be 450 minus 0.15x. In IT, it would be 500 minus 2.5x, 0.25x. Then in HR, it would be 350 minus 0.15x. Now, these are the respective number of commerce student in these particular departments. Now, अब यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि ये वाले जो नंबर है या फॉर दैट मैटर ये वाले जो नंबर है कॉमर्स के, नाइदर ऑफ देम कैन बी नेगेटिव, राइट? अब यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे तो हम डायरेक्टली कुछ बोल नहीं पाएंगे बिकॉज आपको चाहिए इंजीनियरिंग, बट इंजीनियरिंग का नंबर तो कुछ भी आ सकता है बिकॉज इनका एडअप अगर आप देखो तो कितना आएगा, एक्स ही आएगा. अब एक्स को तो आप कुछ भी रख सकते हो, तो इस पर्टिकुलर इस नंबर के बेसिस पे, इस कॉलम के नंबर्स के बेसिस पे तो आप नहीं बोल पाओगे. बट व्हेन वी कम टू दिस, इन वैल्यूज को आपको नेगेटिव नहीं बनाना है. बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इनका फॉर्म देखो तो इट्स लाइक 300, इट्स ए 300 माइनस 0.25x है. तो अब पॉइंट ये समझ में आता है वी कैन नॉट कीप दिस x एज एनीथिंग, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको x को बहुत बड़ा नंबर रखूँ तो 0.25 इंटू एक बहुत बड़ा नंबर 300 से ग्रेटर भी हो सकता है. बट प्रॉब्लम यह है कि 300 माइनस 300 से बड़ा नंबर तो फिर तो एक नेगेटिव वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा. तो वहीं पे अपने को क्या है, प्रॉब्लम है. दैट मीन्स कोई ना कोई आपकी एक्स की एक अपर लिमिट होगी एंड उसी अपर लिमिट के अराउंड हम रिवॉल्व करेंगे. तो जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं अपने पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू, कैन नॉट बी द वैल्यू, तो वी आर लुकिंग फॉर सम रेंजेस काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है, मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है, मे बी मिनिमम लिमिट कितनी हो सकती है. तो यहाँ पे अगर हम फिगर आउट करना स्टार्ट करें कि ये नेगेटिव जाएगा कब, तो उससे आपको अपर लिमिट पता चल जाएगा. तो 0.25x जैसे इसको हम अगर लिखेंगे, सो वी कैन सिंपली राइट दिस एज 300 minus 0.25x. This actually should not be negative. So that means we are saying this has to be greater than equal to 0. अब इसके बेस पे आप ये बोल रहे हो कि 0.25x इधर चला जाएगा. So 0.25 is already x by 4, that is 1/4. तो x by 4 should be less than equal to 300. इसका मतलब x should be less than equal to 4 into 3, 1200. तो इससे एक्चुअली में समझ में आ रहा है कि फर्स्ट मार्केटिंग के थ्रू आप ये बोलना चाह रहे हो कि इस नंबर को अगर नेगेटिव नहीं बनना है तो x की आपकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1200 तक जाएगी. 1200 से ऑब्वियसली वैसे नीचे ही रहेगा, 1200 भी नहीं होगा फिर तो ये जीरो हो जाएगा, तो फिर ये रेशो क्यों ही दिया होता, राइट? तो 1200 से नीचे है, द मैक्सिमम वैल्यू इज एक्चुअली 1200. सो 1200 से हम नीचे आएंगे. इसी तरीके से अगर आप हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए चेक करो, सो विल रियलाइज जैसे यहाँ पे 200 माइनस 0.2x, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि यहाँ से जो x की एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू है सिर्फ 1000 है, बिकॉज 0.2 इंटू 1000 वुड बी 200 एंड 200 माइनस 200 पे जाके जीरो आएगा. तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अगर मैं रख सकता था तो 1000 रखूंगा. हाँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि 1000 नहीं होगा, इट मीन्स 999 मैक्सिमम हो सकता है, बट 999 हम जा सकते हैं मे बी. ऑल्सो वो रेशियो में एडजस्ट होना चाहिए, बट 1000 से ऊपर नहीं जा सकता, वी कैन गारंटी दैट. तो यहाँ के थ्रू आपका जो मैक्सिमम आ रहा है 1000 आ रहा है, पिछले वाले से आपका कितना आया था 1200, राइट? सो यहाँ से 1200, यहाँ से मे बी 1000, यहाँ से अगर आप देखोगे तो 0.15 इंटू कितना करना पड़ेगा कि 450 बने, इट वुड बी 3000. तो यहाँ से मैक्सिमम लिमिट और ऊपर है 3000, राइट? यहाँ से अगर आप देखोगे 0.25 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट वुड बी लेट्स से 2000, एंड यहाँ से 0.15 एंड दिस इज देखो ग्रेटर देन 1000 ऑब्वियसली, 15 to 30, 15 अप्रोक्सीमेटली 2000 से भी एक्चुअली में ऊपर जाएगा, बिकॉज 3000 बनने के लिए इसको 2000 बनना पड़ता. 2000 से ऊपर का नंबर है. नाउ वी डोंट नीड दिस नंबर व्हेन ही वाज. यहाँ पे अगर आप रियलाइज करो, मैं कह रहा हूँ कि x की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1200
इसके थ्रू 1000, इसके थ्रू 3000, इसके थ्रू 2000, इसके थ्रू 2000 से कुछ ऊपर, तो x तो एक ही है ना, तो x की मैक्सिमम ऐसी कौन सी पॉसिबल वैल्यू है जो इन सबको सेटिस्फाई करेगी? विल बी सेइंग कि x की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू सिर्फ 1000 हो सकती है। 1000 से ऊपर इसलिए नहीं हो सकती है बिकॉज मे बी बाकी को सेटिस्फाई कर दे, बाकी के रेंज में आ जाएगा, बट इसकी रेंज से बाहर निकल जाएगा ना, तो ये वाला नेगेटिव बन जाएगा। हमें एक को भी नेगेटिव नहीं बनाना है, दैट सिंपली मीन्स कि हम x की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या ले सकते हैं? 1000 ले सकते हैं, राइट नाउ। इसी के अराउंड फिर हम इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करेंगे तो मैं बोलता हूँ कि लेट्स से इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू दैट इज x की अगर 1000 होती है, तो याद करो x है क्या? आपका नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो अब इस क्वेश्चन पे अगर आप वापस आओगे, हाउ मेनी ऑफ द वैल्यूज गिवन बिलो कैन बी द पॉसिबल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टू टोटल स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज। तो हमारा इंजीनियरिंग का मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है? 1000। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो फिक्स है, दैट इज 1800। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैक्सिमम पॉसिबल जो मेरा ये जो गिवन फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 1000 बाई 1800। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो 10 बाई 18 या फिर 5 बाई 9 तक जा सकता है। तो जो भी आपकी बाकी जो फ्रैक्शंस पॉसिबल हैं वो 5 बाई 9 से क्या होने चाहिए? लेस होने चाहिए। अब 5 बाई 9 को अगर आप अप्रॉक्सीमेटली देखो तो कितना आएगा? 9545 एंड 9545 0.55। सो all the fractions which are less than 0.55x can be the possible fractions. now बस हमें यही अब कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है। सो 4/15 की अगर आप वैल्यू देखोगे तो 4/15 की वैल्यू आपकी 0.26x आती है, 0.26 अप्रॉक्सीमेटली 0.26। दिस इज 3/4 की वैल्यू इज 75%, सो 0.75। 3/5 इज 60%, सो 0.6 एंड 8/15 ऑल्सो आपका इसका जस्ट डबल हो जाएगा, सो 0.26 का डबल कितना ही चला जाएगा? 0.52। सो 0.55 से आपका नीचे आना चाहिए था। सो वी हैव ओनली दीज पर्टिकुलर वैल्यूज जिसको हम ले सकते हैं। हेंस द आंसर टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज 2 वैल्यूज आउट ऑफ दीज 4 वैल्यूज which can be the possible fractions, right? So this is a little complex. This was a difficult question in this particular set. Now moving on to the final problem. The final problem says, if in all 100 students from commerce background who study marketing stay in hostel, find the number of students from the commerce background who have opted for hostel and are studying operations. Now we'll have to take this step by step. So this says this says there are 100 students from commerce background who study marketing and stay in a hostel. Now कॉमर्स मार्केटिंग, सो लेट्स गो टू मार्केटिंग। मार्केटिंग में जो आपका रेशो था हॉस्टलर एंड डे स्कॉलर का कितना था? 2:3। तो कहीं ना कहीं मैं सिंपली यही तो कह रहा हूँ कि कॉमर्स मार्केटिंग हॉस्टल ये जो आपका है, ये जो 2 नंबर है हमारे लिए रेशो में, ये जो 2 है यही आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इस 100 को। दैट मीन्स अगर मैं कह रहा हूँ कि 2:3 में ये 2 आपका 100 है, दैट सिंपली मीन्स कि 50 टाइम्स हुआ तो ये भी 50 टाइम्स करके कितना आ जाएगा? 150। दैट मीन्स मार्केटिंग में जो टोटल आपके कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो जाएंगे वो इन दोनों का सम हो जाएगा, दैट इज 250। नाउ 250 इज द टोटल नंबर ऑफ व्हाट? कॉमर्स स्टूडेंट्स इन मार्केटिंग। सो अगर 250 कॉमर्स स्टूडेंट्स आपके मार्केटिंग में है तो 300 माइनस 250 ये आपका नंबर क्या मिल जाएगा? इंजीनियरिंग का मिल जाएगा इन मार्केटिंग। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि इंजीनियरिंग का नंबर आपका 50 आ गया। नाउ बिकॉज आपका 50 आपका 25% की वैल्यू है, राइट? यहाँ से अगर हम टोटल भी निकालते हैं वो भी हम कर सकते हैं, जैसे कि 50 आपका 25% है, राइट? 25% क्या होता है? किसी चीज़ का 1/4 होता है। तो टोटल इंजीनियरिंग का 1/4 50 है, दैट मीन्स टोटल इंजीनियरिंग का नंबर अभी कितना ले सकते हो आप? 200 ले सकते हो, राइट? सो वी कैन डू दिस ऑल्सो। 200 आपका टोटल निकल जाएगा इंजीनियरिंग का। अब आपको करना क्या था एक बार वो देख लो। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड हु हैव ऑप्टेड फॉर हॉस्टल एंड स्टडिंग ऑपरेशंस में आपको जाना है कॉमर्स और हॉस्टल वाले नंबर पे। तो ऑपरेशंस में आपका कितना परसेंट है? 15% है। अब आप सिंपल वापस इस पे जाना है, तो 200 का 15% निकालना है, सो दिस वुड बी 30। नाउ 450 माइनस 30, 450 माइनस 30, टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स इन ऑपरेशंस कितना आ जाएगा? 420। अब उसमें हॉस्टल वाला निकालना है तो रेशो तो आपका कितना ही है? 3:2 है।
3:2 के रेशो में सिंपली आप 420 को डिवाइड कर दो, वही आपका आंसर होगा। तो 3:2 के रेशो में 420 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 and 2 अगर होता तो 5 होता, 5 की जगह 420 है, सो 5 की जगह 420, सो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 8 40 84, तो 84 टाइम्स हो रहा है, सो आपका हॉस्टल वाला 3 के करस्पॉन्डिंग है, तो वो भी आंसर क्या आ जाएगा, 84 इंटू 3, 84 इंटू 3 वुड गिव अस 3 4 12 3 8 24, 252. थोड़ा कैलकुलेटिव, बट दिस इज अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड. Right, so I hope you have understood all the problems in this particular set. If you have any doubts, you can also put that in comments. Happy learning.